Hello students, how are you all? Welcome to your own channel. So today we are going to discuss very small topics. कहने को छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं, but they are very important for your exams, especially one topic that is apomixis. Generally question is asked from this topic. So today we are going to discuss only 3 topics जो बहुत छोटे छोटे हैं, and this video is not going to be too long to okay. So firstly we will discuss about the question which I asked you yesterday, and do you remember what was that question? Actually question was that in mature seed how much moisture content is there. जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर कितना मॉइस्चर बचता है, कितना मॉइस्चर लेफ्ट होता है. एंड योर ऑप्शंस वर 5 to 10%, 10 to 15%, 15 to 20% और 20 to 25%. So we discussed yesterday about this thing कि कितना मॉइस्चर उसके अंदर बचता है, and the answer is 10 to 15% moisture is left. I gave you question only from NCERT because my channel is dedicated for NCERT only, because all NCERT review we will discuss for our board exam. So today we are going to discuss the topic that is artificial hybridization. That is separate topic. Second topic is apomixis, it is totally different from that. And third one is polyembryony, it is also a different topic. So the छोटे छोटे topics मैंने last के लिए ही बचा के रखे थे कि छोटे छोटे topics हैं तीनों और important भी हैं, कोई भी तीनों में से 3 marks में पूछा जा सकता है. But out of these 3, if I give you one you can say clue or hint which is most important, that is apomixis. Okay, so first topic we are going to discuss, that is artificial hybridization. As name is telling, artificial. Artificial means this process will be man-made. Hybridization we discussed in 10th class also about hybridization. Hybrid means mixing of character. Hybrid क्या होता है? जिसमें characters, एक character, second character, दोनों character को mix किया जाता है. That thing is known as hybrid, and that process in which this mixing takes place is known as hybridization. And if it is occurring by it is occurring man-made, अगर ये man-made है तो ये नाम क्या हो जाएगा? Artificial hybridization. So what happen in this process? The process in which 2 different species or genera are crossed to combine desirable characters to produce superior varieties. तो ये क्या प्रोसेस है जिसमें 2 अलग अलग स्पीशीज, specifically genera is the plural of genus. Okay, so 2 different species or 2 different genus, they are crossed. Suppose this is one species and this one is second species. Okay, they both are crossed together, or first genus second genus. If they are crossed together means उनके बीच में reproduction कराया जाता है. For what purpose we are doing this? Why we are doing this? To obtain desirable character. Suppose we want कि हमारी crop में हमें कैसा चाहिए कि crop की productivity भी ज़्यादा हो and crop should be disease free. Okay, so we are having one variety which is disease free, जिस crop में कभी भी disease नहीं लगती है, and we are having second variety which which produce more material, or you can say whose productivity is high, जिसकी productivity ज़्यादा है. हम चाहते हैं कि हमारी एक ही crop में दोनों character आ जाए. So what the breeder do? Breeder means the person who will do cross of 2 different variety or 2 different species. So what he will do? He crossed first species with second species to obtain desirable character or to obtain superior variety. Desirable character लेने के लिए, superior variety के लिए he do this thing. So that process is known as artificial hybridization. Again I am telling, hybrid means mixing of character, characters को mix किया है उसने, इसीलिए इस process को बोलते हैं hybridization. Okay, so this artificial hybridization takes place by 2 processes or 2 steps are involved in doing artificial hybridization, and these 2 steps are, first is emasculation, second one is bagging. Okay, so emasculation means masculine word is always related, according to English it is related to male. So what happen in this case, as you know कि male part of the flower is known as what? Stamen. This is known as stamen, and upper part in which is anther. So what is done?
removing anther of a bisexual flower before anther dehisces. Bisexual means the flower which is having both sex, means pistil as well as stamen. Both male and female are present in a single flower. So from that flower what happen, क्या होगा, bisexual flower में उसी anther से उसी stigma तक pollen grain पहुंच सकते हैं. So what is done, firstly from that bisexual flower anthers are removed. anther को remove कर दिया जाता है. Why? So that self pollen does not pollinate the stigma. उसी का pollen उसी की stigma तक ना पहुंच पाए. तो हमें उस चीज को रोकना है. We are to prevent that. So it is done to make sure that only desired pollen grain are used for pollination. What we are to do? We have to mix the variety ना. We have to mix the characters. So what is done? सबसे पहले anther को remove किया जाएगा so that only female part left in the flower. Now what is done? Remove the anther, only female part will be left. So what now we will do? Bagging. Second technique is bagging. Bag, उसके ऊपर कोई bag डाल दिया जाएगा. किसके ऊपर? Now we are having, suppose this flower we are having, and in this flower firstly pistil is there and then stamen male part is there. Okay, and from this stamen or from this you can say from this flower stamen is removed. हमने क्या किया है? एंथर को रिमूव कर दिया है. एंड इस प्रोसेस का नाम क्या दिया है मैंने? emasculation. The process is known as emasculation. Now what we are to do? This emasculated flower में अब हमने क्या करनी है? बैगिंग करनी है. बैगिंग करने का मतलब जो ये स्टिग्मा है वी हैव टू कवर इट विद अ बैग. इसको एक बैग से कवर कर देना है. ये नहीं है कि तुम स्कूल बैग से कवर कर दोगे या कोई भी तुम्हारा कैरी बैग है तुम्हारे घर पे. यू हैव नॉट टू डू दैट. व्हाट यू आर टू डू? बटर पेपर से बना हुआ बैग. द बैग मेड फ्रॉम बटर पेपर. ओके, emasculated flowers are covered with a bag made up of a butter paper. इस flower को हमने specially stigma को we have to cover with a bag. Why we are doing this? Why we are doing this? To remove or to prevent the contamination. किस चीज से बचाना हमने? Contamination से बचाना है कि कोई pollen आके उसको pollinate ना कर दे. Because what we want? हमें तो उस desired pollen से pollinate कराना है ना. So that no other pollen come and pollinate the stigma. Only which pollen we want, we will dust that pollen on the stigma. उसके ऊपर हम spread कर देंगे. So when stigma attains receptivity, when stigma become receptive, जब वो able हो जाएगी pollen grain को receive करने के लिए, then mature pollen collected from anther and dusted on stigma and again रीबैग्ड. उसको फिर से रीबैग कर देंगे. जैसे ही पोलन उसके ऊपर हम डिजायर्ड पोलन डस्ट करेंगे उसको फिर से रीबैग कर देंगे ताकि फिर से कोई और पोलन वहाँ पे आने की कोशिश ना करे. सो दिस वाज अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कि इसमें क्या क्या होता है. इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, टू मेन टेक्निक्स आर देयर विच आर प्रेजेंट और विच आर इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? नाउ वी आर डूइंग आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज apomixis. Now we will start our next topic, that is apomixis. This topic is apomixis. You have never heard about apomixis in your previous classes. Only in this class you are going to learn about it. Now what is apomixis? It is formation of seed without fertilization. Formation of seeds without fertilization. Like we discussed about fruit na, that formation of fruit without fertilization is parthenocarpy. Formation of fruits without fertilization is parthenocarpy, and that example is banana. So same here, अगर seed fertilization के बिना ही बन जाता है तो वो प्रोसेस होती है एपोमिक्सिस. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज नो मेल गैमेट इज प्रेजेंट. नो मेल गैमेट इज प्रेजेंट. ओके, एंड इन विच family or in which plants this process takes place? Especially in Asteraceae family. In
Asteraceae family and in grasses. Apomixis takes place in Asteraceae and grasses. Next important thing about apomixis that अब सीड बन रहा है तो ऐसा लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तभी तो सीड बनता है, बिकॉज सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. But actually it is a type of asexual reproduction because male gamete is not there. When both gametes are there, then only sexual reproduction. Na? But if one gamete is there, one parent is there, then it is type of asexual reproduction. Okay, so what you will write here, you will write that it mimics. Mimics means उसकी copy करता है. किसकी? It mimics sexual reproduction. It mimics sexual reproduction, but it is type of asexual reproduction. It is type of asexual reproduction. Got it? So this statement is very important. How question is asked, justify this statement that it mimics sexual reproduction, but actually it is type of asexual reproduction. So what you will say that seed is forming, seed is the final product of sexual reproduction, that's why we think कि ये पक्का sexual reproduction होगा, but only one parent is involved, so it is a type of asexual reproduction. Okay, so now we will discuss कि apomixis किस condition में होती है. क्या ऐसी condition आती है कि seed बिना ही फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज कंडीशन. टू कंडीशंस आर देयर जिसकी वजह से जो सीड बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन जाता है. ओके, सो टू कंडीशंस वी कैन राइट हियर कंडीशंस. कौन सी दो कंडीशन है या कौन सी दो प्रोसेस है? फर्स्ट कंडीशन, यू नो मेगास्पोर मदर सेल इज देयर. We discussed in our topic megasporogenesis. Megaspore mother cell, MMC. Megaspore mother cell is diploid. It is 2n condition. What happened? We discussed in previous class that meiosis takes place in megaspore mother cell, and due to meiosis 4 megaspores are formed. But what happened in this special condition? Instead of meiosis, mitosis takes place. मियोसिस की बजाय क्या हो जाती है? माइटोसिस हो जाती है. सो ड्यू टू माइटोसिस व्हाट हैपन, जो एग सेल बनती है दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विच इज डिप्लॉयड. ओके, इट डेवलप इनटू सीड विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड. दिस कंडीशन अकर इन एग्जाम्पल यू कैन राइट एप्पल और इट अकर इन pear. Clear? So what happened in megaspore mother cell, instead of meiosis, mitosis takes place, due to which egg is diploid, then embryo is diploid, then seed is diploid. So there is no need of male gamete. Male gamete तो कहीं आया ही नहीं है. So fertilization didn't take place. Fertilization नहीं हुई है. So formation of seed without fertilization is known as apomixis. Second condition, what happens? We know the diagram of ovule. Ovule का हमने सबने डायग्राम किया है. ओके, लाइक दिस द डायग्राम ऑफ ओव्यूल जो हम पहले कई बार बना चुके हैं. ओके, व्हाट वाज देयर? ओव्यूल के अंदर ये क्या था? एम्ब्रियो सैक था इस तरह से. ओके, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ये कौन सा टिश्यू था? This tissue is nucellus. ये कौन सा टिश्यू था? Nucellus, which was providing nourishment to the developing embryo. Okay, what happens? Division takes place in nucellus. Nucellus start dividing. वो divide करना शुरू कर देता है. After dividing, its cell protrude into embryo sac. Protrude means enter कर जाती है, embryo sac के अंदर चली जाती है जो dividing nucellus cell है, and develop into embryo. और वो क्या बनाना शुरू कर देती है? एम्ब्रियो. और कोई एक एम्ब्रियो नहीं, कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं क्योंकि न्यूसेलस में तो बहुत सारी सेल्स है ना, बहुत सारी डिवाइड करना शुरू कर देती है. एंड मैनी एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो सैक. इट मीन्स यू कैन से मैनी एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन ओव्यूल और इन सिंगल एम्ब्रियो सैक. दैट्स व्हाई द कंडीशन इज नोन एज पोली एम्ब्रियोनी. और उन एम्ब्रियो को बोलते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो.
लेट मी राइट समथिंग अबाउट इट कि क्या बताया मैंने. न्यूसेलस इज देयर, न्यूसेलस स्टार्ट डिवाइडिंग, न्यूसेलस स्टार्ट्स डिवाइडिंग. ओके, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है. देन डिवाइडिंग सेल्स प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मीन्स एंटर कर जाती हैं. डिवाइडिंग सेल्स प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में वो सेल चले जाते हैं. ठीक है. देन दिस सेल्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, वो क्या बना लेती हैं, एम्ब्रियो बना लेती हैं, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. सो मैनी एम्ब्रियो फॉर्म्ड, मैनी एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन सिंगल ओव्यूल, एक ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं. और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी. व्हाट इट इज सेड दैट, पॉली एम्ब्रियोनी. इस कंडीशन को क्या बोला, पॉली मीन्स many, embryony means embryo. So many embryos are formed and these embryos are known as nucellar embryo. इन एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलर एम्ब्रियो. न्यूसेलर एम्ब्रियो क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलस. क्लियर. सो न्यूसेलस डिवाइड करना शुरू कर देता है. डिवाइडिंग सेल एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक वेयर दे फॉर्म एम्ब्रियो and many embryos are formed and that's why the condition is known as polyembryony. Okay, let me give you very easy example of this polyembryonic condition. You can do this experiment at your home also. Nowadays you are eating oranges, okay, and oranges have many seeds, you know that. So when you take one seed of orange and you will open it, you will see many embryos inside the seed. उस सीड में सिंगल एम्ब्रियो नहीं मिलेगा, उस सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो you will find in that seed. So that condition is known as polyembryony. So what example you will write here, in case of mango also it happens and citrus. Citrus means खट्टे फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खास तौर पे ऑरेंज की अगर बात की जाए तो उसके अंदर पोलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है. Okay, so these are the example of polyembryony. So both topics are covered, apomixis also, polyembryony also. I think you have understood the things clearly. Now last thing about apomixis, importance of apomixis. This question is your NCERT question also. I think last second question है ये आपके NCERT में, and exam में भी ये पहले आया है, that what is apomixis and what is its importance. Importance of apomixis. Okay, importance of apomixis. Before we start apomixis की importance, two things are there. एक तो सीड है हमारे पास हाइब्रिड सीड and second type of seeds are apomictic seeds. Two seeds are there, hybrid seeds and apomictic seeds. So hybrid seed, I told you earlier that meaning of hybrid means mixing of characters. Hybrid में क्या होता है, characters को mix किया जाता है. So what happens, farmers are there, okay, what they need very that type of seed which have high productivity, जिसकी ज़्यादा productivity उनको वैसे seed चाहिए. Hybrid do this thing, hybrid ऐसा करता है. Hybrid seeds have this advantage कि they have productivity very high. So farmer want these seeds. But what happens, hybrid seeds are very costly. They are very costly. इनकी artificial hybridization कराई जाती है तो बहुत costly होते हैं, बहुत expensive होते हैं. Second thing, they have to be produced every year. They have to be produced every year. इनको हर साल बनाना पड़ता है. ये इसकी सेकेंड डिसएडवांटेज है ऑफ हाइब्रिड सीड. सो व्हाट वी वांट, अच्छा वन मोर थिंग इज देयर, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस. सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेपरेशन, अलग. सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर इन केस ऑफ हाइब्रिड सीड. सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ देम. तो अब हमें अल्टरनेट तो चाहिए ना, एक की डिसएडवांटेज पढ़ ले तो हमें अल्टरनेट चाहिए, ऑप्शन चाहिए. सो व्हाट ऑप्शन वी आर हैविंग, एपोमिक्टिक सीड्स. हमारे पास क्या है,
apomictic seed which are not as costly as hybrid seed. They have not to be produced every year, इनको हर साल produce भी नहीं करना पड़ता है. And no segregation of characters take place. Not costly, what you will write? They are not costly. Next thing, segregation, you will write no segregation of characters takes place. No segregation of characters takes place. So this is the importance of apomictic seeds or apomixis. It means it is beneficial for farmers. So instead of hybrid seed, apomictic seeds are used. So this was all about today's topic. हमने क्या क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना. सेकेंड वी हैव डन एपोमिक्सिस एंड थर्ड important topic we have done polyembryony. So you have to prepare them properly. I think all things are clear to you. I tried my best, but if you have any suggestion or you have any doubt, you can write that in your comment box. So tomorrow we are going to discuss our chapter second. Third chapter. Chapter second is over. We are going to discuss chapter third by tomorrow. Thank you.